अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ शकील, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का इंस्ट्रक्टर। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अब तक रिवाइज और पढ़ लिया होगा। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल लेक्चर। वन मोमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, Tropic of Cancer is a line of latitude at 23.5 degrees north of equator. This is the definition of Tropic of Cancer. Okay, so if this is the equator, ये center line across the earth है, इसे हम equator कहते हैं। तो it is 23.5 north of equator. This is called Tropic of Cancer. It's very easy. इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बट आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड लाइन व्हिच इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। The next slide is about Tropic of Capricorn. Again, just like the Tropic of Cancer, it is a line of latitude which is 23.5 degree south of equator. So like as you can see, ये है equator की line। तो Tropic of Capricorn is 23.5 degree south of equator है। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। वैसे इसमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर में कि कमर्शियल ज्योग्राफी के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, याद आनी चाहिए। नंबर 1, आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए, और नंबर 2, आपकी मेमोरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके जहन में मैप है तो यू कैन इमेजिन इमेजिनरी लाइन इन द सेंटर जो कि इक्वेटर होगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। So इसमें there is no rocket science in this thing. You just need to memorize it. Not even memorize it, you just need to know. So coming to the next topic, this is it's called Arctic Circle. Arctic Circle, as you can see, as you can infer from the name से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल के अराउंड होगा। और it is, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, इट इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल कहलाता है। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस विल बी द लैटिट्यूड लाइन आर्टिक सर्कल। इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, इसी के मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। आप सोचे इसका, अगर आर्टिक सर्कल है तो नीचे साउथ पोल का भी कुछ ना कुछ सर्कल होगा। लेट्स सी उसका नाम क्या है। उसका नाम है ये आर्टिक सर्कल हमने पढ़ लिया। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल। व्हाट इज अंटार्कटिक सर्कल, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है कि अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड व्हिच इज 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर है, तो 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आर्कटिक सर्कल। तो कौन कौन सी लाइन हमने याद की, देयर आर 5 लाइंस व्हिच वी नीड टू रिमेंबर अप टिल नाउ। नंबर 1 इक्वेटर, Number 2, Tropic of Cancer. Number 3, Tropic of Capricorn. Number 4, Arctic Circle. Number 5, Antarctic Circle. It's pretty easy.
नो रॉकेट साइंस, जस्ट नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर, और आपको ये डिग्रीज याद रखनी है. नाउ कमिंग टू द last two elements in this topic, this element is called North Pole, as depicted from the name. जैसे कि नाम से जाहिर है, North Pole is the northernmost point on the Earth. Northernmost point on the Earth is called North Pole, और official definition में it's the latitude of 90 degrees, obviously, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं latitude बढ़ रहा है, तो बिल्कुल exact 90 डिग्री पे आपका North Pole होगा. इसी का exact opposite क्या होगा? South Pole. South Pole की क्या definition है? It is the southernmost point of the Earth, this, and it also has the latitude of 90 degree. So if we have to revise this, then what have we learned so far? We have learned that we have equator in the center, we have Tropic of Cancer at 23.5 north of equator, we have Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south of equator, we have Arctic Circle at 66.5 degrees north of equator, we have Antarctic Circle at 66.5 degrees south of equator, and then we have North Pole at the north with a latitude of 90 degree, and then we have South Pole in the south with the latitude of 90 degrees. Pretty easy concepts, but very important. आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का क्विक लेक्चर अच्छा लगा होगा. It is quick, but it is nevertheless very important. So before I sign off, please like our channel, follow us on our channel, join our WhatsApp community, sign up on our website, and also follow us on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Thank you very much. मैं हूँ यूसुफ शकील, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का ट्यूटर. उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 अच्छा लगा होगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज.